हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मैंने समस्त मो सरस्वती कृष्ण स्वागत। लास्ट वीडियो रे आमे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स रो किछि क्वेश्चन डिस्कशन करथिले। ए वीडियो रे आ किछि क्वेश्चन डिस्कशन करबा जहा कि रहइबो हाइपोथेसिस टेस्टिंग रो पॉपुलेशन मीन ऊपर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कोन देछि। फर्स्ट क्वेश्चन देछि व्हाट इज द assumption made for the performing the hypothesis test with the t distribution। टी टेस्ट सहित हाइपोथेसिस रो कोन परफॉर्मिंग अछि ता देखबा। द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन सिमेट्रिक। द डिस्ट्रीब्यूशन हैज मोर देन वन मॉडल क्लास। द डिस्ट्रीब्यूशन हैज ए कांस्टेंट वेरिएंस। द डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कोन हो आंसर हो द डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज द assumption मेड फॉर द परफॉर्मिंग द हाइपोथेसिस टेस्ट विथ टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कौन हम द डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सप्लेन कौन को देखो for testing of hypothesis with t distribution it is assumed that the distribution follows a normal distribution. The region is identified and hence based on the normal variant hypothesis is accepted or rejected. Next देखो second number question, if the hypothesis is rejected at 0.6 level of significance then the dash it will be rejected at the any level. It must be rejected at 0.5 level. It may be rejected at 0.5 level. It answer of C. It may be rejected at 0.5 level. If the hypothesis is rejected at 0.6 level, the significance is then may be rejected at 0.5 level. Explanation कौन कुछ देखो. So if the hypothesis is rejected at 0.6 level, the significance then p value and probability is smaller than 0.6, hence p can be less than 0.5 also, therefore it may be rejected at 0.5 level of significance. Okay. Next question देखो, in a two-tailed test when null hypothesis is rejected for a true alternative hypothesis then it has dash error. In a two-tailed test when null hypothesis is rejected for true, जत ट्रू थिला तमे कोन ता कलो रिजेक्टेड कर देला, एटा हबो आंसर हबो नो एरर हबो हैला। ट्रू अल्टरनेटिव फॉर ए ट्रू अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देन इट हैज नो एरर हबो नै, कारण एटी नल ट्रू अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ता ट्रू अछि, नल हाइपोथेसिस ता नल ही अछि, तेन करी एटा ठीक अछि। ओके, इन द टेस्टिंग हाइपोथेसिस टाइप 1 एरर occurs when the reject the null hypothesis. On the contrary, the type 2 error occurs when the we accept false null hypothesis. যেতବେଳେ ট্রু থাকে তা আমি তাকে ক্যান্সেল করে দিଅନ୍ତି, মানে রিজেক্ট করে দিଅନ୍ତି, যেটা নল হাইপোথিস টাইপ 1 এরর হবো। যেতବେଳେ ভুল থাকে তাকে কোন করନ୍ତି ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି, এটা হবো টাইপ 2 এরর। Hence if the alternate hypothesis is true and a null hypothesis is rejected then no error is occur. Okay, next question देखो, 4 number question, in a hypothesis test what does the p value signify? p value कौन सिग्निफाई करता है? इन द हाइपोथेसिस टेस्टिंग रे p value कौन करता है? स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस, लार्जेस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस, स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस, स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस। एटा कौन आंसर करता है? स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। आमे कौन करते? रिजेक्ट करिया पई देखते ना कि एक्सेप्ट करिया पई देखते। रिजेक्ट करिया पई जेहेतु देखते तेणुकर स्मॉलेस्ट लेवल माने गोटे छोट लेवल आमे चेक करथां। तमने आंसर देखो, एक्सप्लेनेशन देखो, इन ए हाइपोथेसिस द p value signify the smallest level of significance for the rejection of null hypothesis. Below this value for every value the hypothesis is rejected. Okay, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखो 5 नंबर क्वेश्चन, द null hypothesis has level of significance 9%. For what value of level of significance it will be rejected? केते होबो? एटा होबो 0.009%। ताने एटा कोन होबो? रिजेक्टेड हिजो। The level of significance of null hypothesis is 0.09, hence the hypothesis will be rejected at value of less than 0.09. Okay, our answer हिजो, आंसर होबा कथा कोटा आंसर सी होबा कथा किंतु बी होबा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, the consider a trial of a criminal if a type 1 error has occurred in the three judgment, then which of the following statement is true? A guilty person is set free
an innocent person is convicted, a guilty person is convicted, an innocent person is set free. কোন হবো আনসার? এটা হবো আমার আনসার হবো বি, an innocent person is convicted হয়ে যাই পারে এটি। তেণু করি consider a trial criminal, the type 1 error is her occurred। type 1 error মানে কোন? টাইপ যোটা আমরা null hypothesis ট্রু থিব তাকে আমরা কোন করতে ক্যান্সেল করতেন, সেটা হলো টাইপ 1 এরর হবে। ওকে, the judgment কোন হবে? the judgment which the judgment then which of the following statement is true? the innocent person is convicted হয়ে যায় পারে। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন দেখো 7 নম্বর কোশ্চেন। 7 নম্বর কোশ্চেন কোন কইছে? if a null hypothesis is accepted then the value of a test statistics lies in the dash, acceptance region, rejection region, critical region, sample region। आंसर হবো acceptance region ভিতর থিব। null hypothesis যদি accepted होची তা মানে কোন আছে? sample region ভিতরে ଆମର কোন sample টা থিব, ଆମର যে acceptance level টা থিব। Okay, if a null hypothesis is accepted then the value of test statistics lies in the acceptance region for the rejected null hypothesis, the value is lie in the rejection region। Okay, next দেখো 8 নম্বর কোশ্চেন, the test statistics for a hypothesis testing is given by the formula। কোন কো ফর্মুলার আমি এটাকে টেস্ট করতেন? হাইপোথেসিস টেস্টিং ইজ গিভেন বাই ফর্মুলা। কো ফর্মুলার তাকে টেস্ট করতেন আমি? ফর্মুলা the sample statistics, आंसर হবো বি। sample হবো आंसर অফ বি, যেটা কি sample statistics minus parameter by standard error। sample statistics minus parameter by standard error রে আমি তাকে কোন করতেন? তাকে আমি চেক করতেন। ওকে, এক্সপ্লেন দ্য টেস্ট হবো হাইপোথেসিস। এক্সপ্লেনেশন কোন কইছে দেখো, explanation কইছি the statistics of a hypothesis is given as the sample statistics parameter by standard error, the test statistics provides a basis for testing a null hypothesis। okay, next দেখো 9 number question, the range of a level of significance lies between dash, infinity, minus infinity and 0, minus infinity to plus infinity, 0 to infinity, 0 to 1 ভিতরে আছে आंसर। আমার आंसर আসবে ডি, 0 to 1 ভিতরে রেঞ্জ অফ সিগনিফিকেন্স আমরা আসবে। ওকে, 0 to 1 ভিতরে। এক্সপ্লেনেশন, the level of significance lies between 0 to 1, the 0 signifies that test is least significant and 1 signifies test is most significant। ওকে, নেক্সট দেখো 10 নম্বর কোশ্চেন, হচ্ছে the effect of rejection of a null hypothesis with decreased in sample size, the effect of rejection of a hypothesis with decrease in sample size। sample size decrease হলে hypothesis কোন হয়ে যায়? rejection হয়ে যাবে। decrease কোন হবে? आंसर বি হবে increase in the sample size, increase with decrease rejection of hypothesis decrease কেতବେଳେ হবো? আমার sample size টা যেতବେଳେ increase হবো সেতବେଳେ hypothesis decrease, rejection of hypothesis টা decrease হয়ে যাবে। ওকে, if n decrease মানে number of n means number of sample decreased, then the value of a level of significance of each alpha decreases, hence 1 minus alpha increases with the which are called the rejection of a test sample increases। okay, next question দেখো 13 নম্বর question, a pair t test consists of n pairs of observation, what is the number of degrees of freedom of test? 2n minus 1, 2n, n minus 1, n কোটা হবে आंसर হবে c, n minus 1, आंसर হবে c, n minus 1। for a pair t distribution, the number of degrees of freedom are n minus 1, where n denote the number of pairs and sample in the test। okay, next দেখো 13 number question, which of the following represent the confidence coefficient? confidence coefficient आ ভিতর কোটা প্রেজেন্ট করছে? 1 minus alpha confidence coefficient প্রেজেন্ট করিব। okay, the level of confidence is represented by 1 minus alpha, it signifies the chance of the alternative hypothesis, it signifies the chance of alternative hypothesis। 14 number question দেখো, the independence value in a set of values of a test is called, the independence value in a set of values of a test is called degree of freedom, test statistics, level of significance, level of confidence। কোন হবে आंसर? आंसर হবে a,
ये हम डिग्री ऑफ फ्रीडम जाको आम कौन कहते डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं इन द टेस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स sample is called a degree of freedom if the sample has n values the degree of freedom is n minus 1. Okay, next question, the 15 number question. A test sample has 7 pairs of sample, the distribution should be contains dash, contains 6 degree freedom minus n minus 1 of 7 minus 1 6 degree of freedom. Okay, explanation, hence the number of samples n is 7, hence the total degree of freedom is n minus 1 is 7, 7 minus 1 equal to 6. Okay, next आउ कुछ क्वेश्चन एटा अछि केतटा क्वेश्चन ये अछि 10टा क्वेश्चन एटा भी कवर करतबा एका थांगरे देखो एटा होचे स्टैटिस्टिकल क्वेश्चंस विथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज द सेटअप ऑफ प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट क्वेश्चन देखो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन कहला इफ द मीन ऑफ पॉपुलेशन इज 29 द मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज केता हो मीन ऑफ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन केता हो एटा हो आंसर हो हमर कोडा हो मझिरे कोडा आसीबो okay if the mean of population is 29 then the mean of sampling distribution is same 29 ही आंसर हो जेतु मीन जदी अछि 29 अछि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आंसर भी से 29 ही आसीबो ओके सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो इफ in systematic sampling population is 240 and selected sample is 60 then sampling interval is dash केता हो एटी हो 4 माने 60 माइनस 240 बाय 60 डिवाइड कर देले हमर कोन भारियो 4 भारियो तेन करी 4 होची हमर कोन सिलेक्टेड सैंपल साइज ऑफ इंटरवल केते इंटरवल केते अछि हेटा भारियो एती ओके नेक्स्ट देखो 3 नंबर क्वेश्चन कोन कहला देखो द मेथड ऑफ सिलेक्टिंग ए डिजायरेबल पर्सन फ्रॉम ए पॉपुलेशन व्हिच describes the characteristics of a whole population is called dash whole population जोटा describe करते ता कोन कहते सैंपलिंग पास ओके द मेथड ऑफ सिलेक्टिंग पॉपुलेशन बहुत बड़ पॉपुलेशन रो हमें किसी सिलेक्ट करबा ता कोन कहते सैंपलिंग को जाए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखो if the standard deviation of a population is 50 and the sample size is 16 then the standard deviation of the sample distribution is keta ho sample distribution keta ho sample distribution of 12.25 ने सेटा हम देखि दबा देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए population mean is given by standard deviation by n to the power 1/2 okay where n is the sample size and delta sorry standard deviation is the sigma is the standard deviation of a population standard deviation of the value equal to n and sigma equal to 50 he 1 from 50 by 16 the 16 power 1/2 केते भारियो 12.25 भारियो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट डज द पैरामीटर k रिप्रेजेंट्स कोन कहूची सैंपलिंग इंटरवल के हमें कोन नितन को कांस्टेंट नितन जोटा कि गोटे इंटरवल हिसाब रे ताको नितन सैंपलिंग इंटरवल ताको नितन डी देखो कोन कहला एक्सप्लेनेशन इन सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर k represents the sampling interval it represents the distance between which data is taken next question 6 number if the distribution of sample is population changes then the mean of sampling distribution must be equal to कोन हो standard deviation of population variance population sample of population mean of population कोन हो एटा हो mean of population sample of population हो okay sample distribution must be equal to sample of population हो आंसर next question देखो the cluster sampling stratified sampling or systematic sampling or are type of a dash direct sampling indirect random and non random sampling आबितर कोटा आंसर अब random sampling cluster sampling stratified sampling systematic sampling तीनटा कार आंसर एटा होची random sampling रो को गोटोडे मेथड सब okay the cluster sampling stratified sampling and systematic sampling are type of a random sampling the advantages of probability sampling method is that they ensure that the sample chosen is representative of the population 8 number question देखो which of the following is classified as unknown or exact value that represents the whole population which of the following is classified as unknown or exact value that represents the whole population predictor
गाइडर पैरामीटर एस्टिमेटर आंसर हम पैरामीटर पैरामीटर कौन करते हैं एक्जाक्ट वैल्यू टाक प्रेजेंट करते हैं अननोन explanation देखो the unknown or exact value that represent the whole population is called parameter. Generally parameter are defined by the small random sampling symbols. देखो ये कौन कहला ये sample size consider large in which of the following cases consider केते sample size large हबो जेतेबेले 30 रु greater than हबो n is greater than 30 और n is greater than नहीं नहीं हाँ n is greater than 30 हम आंसर कौन हम ये दीजिए ना ये दीजिए हाँ ये दीजिए देखो n is greater than or equal to 30 n is equal to greater than equal to 30 हेले कौन कहबा consider large number of sample हम ता कहबा 10 नंबर क्वेश्चन देखबा the selected cluster in a clustering sampling are known as elementary units, primary units, secondary units, proportional units. Answer of elementary units. Selected cluster in a clustering sampling are known as elementary units. Elementary units तक बात है. In cluster, the population is divided into various groups called as cluster. The selected cluster in the sample are called as elementary units. Okay. ये वीडियो रे एतिक थाउ नेक्स्ट वीडियो रे हमें आगे से क्वेश्चन करबा थैंक यू